Hello everyone. So today we will start the first chapter of the 10th class NCERT. Chapter's name is Real Numbers. Okay, so first topic of this chapter is Euclid division lemma or an algorithm. Alright, first of all we'll talk about Euclid division lemma, that what is this lemma. For any two positive integers a and b, there exist two unique whole numbers, say q and r, such that a is equal to bq plus r, where r is greater than equals to 0 and less than b. फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पढ़ने से पहले एक डिवीज़न प्रोसेस फाइंड आउट करते हैं. इफ़ वी डिवाइड 5 by 2, so we got 2 2s are 4, 5 minus 4 it's 1. So we know that it is called divisor, it is called dividend, this is your quotient and this is your remainder. So what is the relation between divisor, dividend, quotient and remainder? This is the relation between among these four quantities. We know that divisor multiply by quotient, and when we add remainder in this multiplication we got 5. For example, 5 is equals to 2 into 2 plus 1 plus 1 is your remainder. So dividend is equals to quotient into divisor plus remainder. This is your Euclid division lemma. Alright, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं. वी हैव टू नंबर्स, टू इंटीजर्स ए एंड बी. इनके लिए आपको ऐसे क्यू एंड आर होल नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें. तो एक तो आपका क्यू हो गया क्वोशिएंट, ये हम फाइंड आउट करते हैं. सिमिलरली रिमाइंडर आर भी हम ही फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीजन प्रोसेस. ऑलराइट, सो a is equals to bq plus r, where r is greater than equals to 0. This is most important property. R is equals to 0 and greater than 0 and less than b. b means आपका कौन, क्वोशिएंट. r की वैल्यू हमें मीन्स रिमाइंडर हमेशा या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी भी इक्वल नहीं होगा आपके क्वोशिएंट के, वो हमेशा उससे छोटा ही होगा. सॉरी, b से हमेशा छोटा ही होगा. So here a is equals to dividend, b is equals to divisor obviously, q is equals to your quotient and r is equals to remainder. Alright, so for example we have two numbers 15 and 6. So we can say 15 and 6. Alright, when we divide 15 by 6, so 6 2s are 12, 5 minus 2 3, so 3 is your remainder. So 15 can be written as 6 into 2 plus 3. So for this is your a, this is your b, this is your q and that will be your r. ऑलराइट, आपके पास कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, कोई भी दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकते जिन्हें हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते. हम हर किसी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b को इस फॉर्म में, दैट इज a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये आपको ट्राई कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा. मेजरली इट हैज़ टू यूजेस. फर्स्ट इज HCF of two numbers. If we have two numbers a and b and we have given that a is greater than b, then we can easily find the HCF, highest common factor of these two numbers, by Euclid division lemma. And the process will be like this. First step is apply division lemma to find q and r. We have given a and b. Okay, by this theorem we can find q and r such that a is equals to bq plus r. So similarly हम डिविजन लेमा से इस a और b नंबर्स के लिए q and r फाइंड आउट करते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. ओके, आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2 इज इफ़ r इज इक्वल्स टू 0, अगर आपके पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाए फर्स्ट स्टेप में, तो जो आपका b है दैट इज दिस नंबर विल बी योर HCF.
अगर सेकेंड कंडीशन इफ़ आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स अगर आर इज इक्वल टू ज़ीरो होता है तो आपका प्रोसेस यहीं पे एंड हो जाएगा और बी आपका आंसर। अगर आर की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती देन अप्लाई द लेमा अगेन फॉर बी एंड आर। अभी आप स्टार्टिंग में अप्लाई करते हैं ए और बी के लिए, फिर बाद में अगर अप्लाई नहीं होता आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता आपके पास तो फिर आप अप्लाई करेंगे सेम लेमा को बी और आर के लिए। ऑलराइट, after that continue this process till the remainder will be 0। ऑलराइट, इस प्रोसेस को तब तक करना है जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल से अच्छी तरह आ जाएगा आपको समझ में। we have two numbers 25 and 55 and we have to find out the HCF of these two numbers. So first of all 55 can be written as 25 into 2 plus 5, 25 into 2 50, 50 plus 5 55। okay, so according to the A is equals to BQ plus R, this is your A, this is your B, this is your Q and that is your R। क्या R is equals to 0 है? No, R is not equal to 0 because R is equals to 5 and 5 is not equals to 0। So we will again apply the Euclid division lemma for B and R, B and R। so what is B? 25 and R is 5, तो B 25 और R 5 के लिए फिर से अगेन अप्लाई करेंगे लेमा को। सो वी कैन से 25 is equals to 5 into 5 plus 0। now in this term R is equals to 0, so what is the value of B is 5, so 5 is your HCF। alright, this is quite complicated, means लिखने में या देखने में थोड़ा ऐसा लगता है complicated है, but we have another method which is similar to this method। we have 55 and 25। okay, first of all obviously हमें पता है कि बड़े नंबर में हमेशा छोटे नंबर का डिवाइड होता है, so bigger number will be your dividend and smaller number will be your divisor। alright, divide करो ऐसे, divide 50, 25 into 2 50, 50 minus 55 minus 50 it's 5, remainder is not equal to 0। then again apply the division process। now in this process means again हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा बट थोड़ा सा अलग फॉर्म में। हम फिर से डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करते हैं बट इन दिस प्रोसेस remainder will be your divisor and your previous divisor will be your dividend। ऑलराइट, इससे और इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अब हमें सिर्फ इसके रिमाइंडर से और पहले वाले डिवाइजर से मतलब होता है। जो पहले वाला डिवाइजर होता है वो अब जाके क्या बन जाएगा आपका न्यू डिविडेंड। ऑलराइट, नाउ डिवाइड अगेन 5 5 सा 25, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, सो this divisor will be your HCF। alright, this is also applicable in your board exams। okay, next is your second use of this division lemma in proving the statements। we have one statement every positive even integer is of the form of 2q, that is हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं और हर एक इवन इंटीजर को ऑड इंटीजर को एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1। इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम और ऑड इंटीजर्स को हम 2q plus 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर q इज एन इंटीजर। और इस टाइप की कई सारी थ्योरम्स हैं आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो आप प्रूव कर सकते हैं with Euclid division lemma। alright, step number 1, let a and b any two positive integer such that a is greater than b, then a is equals to bq plus r। simply state the Euclid division lemma। alright, a is equals to bq plus r। now on putting b is equals to 2, अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 3q या 3q plus 1 3q plus 3 इस टाइप में, देन वी विल टेक b इज इक्वल्स टू 3। अगर 4m plus 1 इस टाइप का आंसर आपको प्रूफ करवा रहा है तो b इज इक्वल्स टू विल टेक 4। ऑलराइट, वी हैव टू प्रूव 2q and 2q plus 1 टाइप टर्म्स, सो वी विल टेक b इज इक्वल्स टू 2 फॉर इक्वेशन नंबर 1। ऑलराइट,
We'll substitute b is equals to 2. So we got a is equal to b is equals to 2. So 2q plus r. This is your important equation. Where r is greater than equals to 0 and less than b, b is equals to 2. So r is less than 2. अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास r की सिर्फ दो वैल्यूज बनती है. एक तो r इज इक्वल्स टू 0 ये रहा, और एक r इज लेस देन 2 दैट इज 0 एंड 1. ऑलराइट, 2 नहीं होगा बिकॉज r इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल टू 2. ऑलराइट, 2 से कम है, 2 के इक्वल नहीं है r की वैल्यू. So r is equals to 0 and 1. We have only two values. Alright, so first we substitute first value r is equals to 0. If r is equals to 0, then a is equals to, this is your 0, a is equals to 2q. Alright, if r is equals to 1, then a is equals to 2q plus 1. अब देखते हैं a is equals to 2q. किसी भी नंबर में अगर 2 फैक्टर कॉमन होता है that means वो डिविजिबल होता है 2 से. दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 2q इज डिविजिबल बाई 2. और अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है 2 से दैट मीन्स वो कौन सा नंबर है, वो इवन नंबर है. ऑलराइट, इसी तरह से इफ 2q इज इवन नंबर, जैसे हम इवन नंबर में 1 नंबर ऐड करते हैं देन इट विल कन्वर्ट इनटू ए ऑड नंबर. फॉर एग्जांपल 2 plus 1, 4 plus 1, 6 plus 1, these are odd numbers because it is not divisible by 2, so ये क्या है, odd numbers हैं. So ultimately we can say that a is equals to 2q, that is 2q टाइप की टर्म्स हमेशा इवन नंबर्स को डिफाइन करती है. दैट मीन्स वी कैन से एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कैन बी रिटर्न इन द 2q plus 1 form where q is any integer. Alright, so we can simplify or write these type of questions by this formula. Alright, so subscribe MathsWeb and share this video as you can possibly. So please share, subscribe MathsWeb, and if you like the video, like and comment for the next topic what you want to learn. Thank you.